So this is my English speaking day one in front of camera. Okay, I haven't speak English in front of camera or in front of anyone. No, I always speak. I always try to speak in front of me or in front of mirror. So this is the first time I'm speaking on camera, or you can say I'm imagining there are so many people, or there is a one person to whom I'm speaking English. Okay, and my English not that great. Okay, my English not that great. I have been studying in English medium, but still my English is not that great. Or you could say, or you could say that I know a little bit English because have studied in English medium, but I can't speak in fluently as like my native language Hindi. So this is my first day, and the topic I'm going to cover in this video is progressive overload. Okay, people see, if you want to increase muscle mass, if you want to increase your strength, okay, if you increase your strength, your muscle mass will get increased. Okay, but progressive overload, people take it. So basically, if you want to increase your muscle mass, so people do progressive overload, but people usually do progressive overload very wrongly, or you could say very गलत तरीके से करते see. Okay, no problem, this is my first day, but I'm trying to give my best as possible. So people makes a lot of mistakes if when it comes to progressive overload. People usually think that only increasing weights it's called progressive overload, and on internet or on YouTube or Instagram you just see everybody just saying progressive overload is all about increasing weights, is increasing weight. If you don't increase your weights, it's not progressive overload. But this is wrong. This is not the way you look at progressive overload. No, बिल्कुल भी नहीं. No, not at all. This is the wrong way of seeing progressive overload. If you want to increase your muscle mass, there is not only one way to increase your muscle mass. If you want to do progressive overload, that is okay, but people do a lot of mistakes in progressive overload. They always go in increasing weights and smaller, they also increase weights in smaller muscles like biceps or like triceps, like shoulders. They think that these are the small muscles. They have a very less capacity to, they are very less, they are very small muscles, so they have a very less capacity, or you could say they have a very less, they in it takes a lot of time to increase. If you want to increase weights, it will take a lot of time to increase weight from just 2 point. If you want to just increase only 2.5 kg, it will take a lot of time. Maybe it will take 1 to 2 years. If I would say, if let's just suppose if I'm doing 30 kg each side on shoulder press, if I want to increase only 2.5 kg, it would take around 2 years. It would take around, not 2 years completely, it will take 1 to 1.5 years to increase only 2.5 kg, because they are smaller muscles. They don't have that much they don't have that much amount of capacity. Okay, these muscles are very small. They don't have that this much amount of capacity. Okay, so what people mistakes, when it comes to progressing overload in small muscles, is they do only like they just try to increase weights. But no. Okay, if you are doing chest press, if you are doing bench press, if you are doing deadlift, that is okay if you want to do progressive overload. But let me just tell you one thing, that after some time your strength will increase very slowly, not like just एकदम से नहीं तुम्हारी strength बढ़ जाएगी. Very slowly your strength will uh, increase very slowly after some time, when you hit a limit. Personally, I'm into gym 2 years. I'm doing gym for almost no more than 2 years. Now now my strength is increasing very slowly. Okay, when I was beginner, when I was in intermediate, my strength was going skyrocket, my strength was increasing very fast. But now I'm in somewhat intermediate to advanced category. In middle, I am in middle of intermediate to advanced category. So you can say that I am
I have moved from intermediate section and I'm going to advanced section. So now my strength is not increasing that speedily. Okay. So basically, in short, I would say these muscles don't have this much amount of capacity. If you kept increasing weights week by week, month by month, no, these are very small muscles. If you want to do progressive overload in these muscles, there is not only one way. There is not only one way to increase. Not increasing weights is not only one way to, is not only the way. If you want to do progressive overload, is if you want to increase your muscle mass, there are so many ways. Control your eccentrics, slow your eccentrics. Okay. If you are, let's just suppose if I'm doing bicep curl, and this is my rod. Imagine there is a dumbbell in my hand, and I'm doing it down, 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 down. Okay. Now this is eccentric part, so slow your eccentric part, or take 2 to 3 seconds to lower your weights and just explode, not like explode. Okay. Slow, and then okay, do. ओके, नीचे गए, करो, नीचे गए, 2 से 3 सेकंड करो. ये बोल रहा हूँ मैं तुमको बेसिकली कि भाई, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के सिर्फ एक ही तरीका ये नहीं है कि तुम वेट्स इंक्रीज करो. नहीं, वेट्स को इंक्रीज मत करो, तुम्हारा जो टेम्पो है उसको स्लो करो. टेम्पो को स्लो करो तुम्हारे. जो तुम इसेंट्रिक पे, ये जो तुम कॉन्सेंट्रिक हो गया, कॉन्सेंट्रिक से तुम जब इसेंट्रिक में जाते हो, जब मसल स्ट्रेच होता है, व्हेन द मसल गेट स्ट्रेच, take 2 to 3 seconds. Okay, 2 to 3 seconds. Take from concentric to eccentric, take 2 to 3 seconds. Slow your eccentrics. Okay, and then contract. Okay, slow your eccentrics, then contract. Slow your eccentrics and then contract. Okay. So what eventually it happened, that your muscle mass will tear a lot. Your muscle mass will break down a lot, because usually you're doing 12 reps in not. भाई अभी तो बहुत basically what I want to tell you that control your eccentrics in small muscle groups. If you want to do progressive overload, don't just increase weights. Okay, do progressive overload by doing progressive overload. Control your eccentrics. Okay, control your eccentric. Take 2 to 3 seconds to down your weight. To take 2 to 3 seconds. Okay, this one way. Second, come rest. Take come rest. This is the second thing, take come rest. And third one, I would say, and then increase your weight, and then increase your weight. But I want to tell you one thing also, that people often let's just suppose there is a one man who is doing, just imagine there is a one guy who is doing bicep curl with 10 kg, with 15 kg dumbbell. And he come to me, and he tell him, and he told me that, brother, मेरे 12 reps आ गए इससे. मैंने ये जो 20 किलो के डंबल से मेरे 12 reps आए. ठीक है. मैंने आई डिड 12 reps with 20 kgs. But when I see his form, when I see his technique, I would say he did only 4 or max to max 5 reps only by his muscles, only by his biceps, only by his biceps. Then the rest of the reps he's taking momentum, he's taking and power from momentum, not from the bicep. His half of the reps he's taking from momentum. Hardly he did 4 to 5 reps by by the muscle he's training. ठीक है. By the muscle he's training, for the muscle he's training, sorry, for the muscle he's training, hardly 4 to 5 reps. And 5 to, and after that 4 to 5 reps he's taking momentum, he's taking power from the momentum. This is the very important concept that I want to tell you, that people often do. People say, and people come and say me that, brother, मैंने 12 reps कर दिए. बट मैं उनको पूछता हूँ कि तूने 12 rep कैसे फॉर्म, कैसे टेक्निक में करे, in which form or in which technique how did you do your fucking 12. आपने वो 12 रेप अपने कैसे करे, मैं वो देखना चाहता हूँ कि भाई आपने 12 reps क्या सच में पूरे वो जो मसल के लिए आप ट्रेन कर रहे हो क्या उससे ही करे, या फिर आपने जर्क लिया, या आप वो जो मसल आप जिसके लिए ट्रेन कर रहे हो उससे आप पावर ले रहे हो,
या फिर आप मोमेंटम से पावर ले रहे हो, या कोई दूसरा मसल आप दूसरे मसल से आप कर रहे हो कुछ, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ एंड कोई बंदा कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं हूँ, मैं कोई दूसरा बंदा हूँ और मैं 20 किलो का बाइसेप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 20 किलो का बाइसेप कर रहा हूँ। अब तुम यहाँ पे देखो, ठीक है, अभी मैंने 1 रैप करा, मैंने 2 रैप करा, मैंने 3 रैप करा, ये मेरा स्ट्रिक्ट फॉर्म है, 3 रैप करा, ये मैंने 4 रैप करा। बट चार आफ्टर 4 to 5 reps आई स्टार्ट टू टेक मोमेंटम ऑफ माई बॉडी। सो नाउ 4 से 5 जो मैंने पहले रेप्स मारे, बिफोर 4 से 5 मैंने जो पहले रेप्स मारे वो कंप्लीटली मेरे बाइसेप्स से मैं ट्रेन कर रहा था। उसमें कोई भी दूसरा मसल इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, कोई मोमेंटम नहीं ले रहा था, कहीं से पावर नहीं ले रहा था। बट मैंने क्या किया, आफ्टर 4 to 5 reps मेरे मसल में इतनी पावर ही बची नहीं, मेरे मसल में इतनी स्ट्रेंथ ही बची नहीं कि वो और रेप्स कर पाएगा। इसके लिए क्या हुआ, मेरी बॉडी मोमेंटम लेना शुरू कर दी। अब दूसरे मसल्स आना इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। अब यहाँ से मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, सो नाउ आई एम डूइंग लाइक दिस। अब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, भले मेरे 12 रेप्स आ गए, 12 रेप्स भले मेरे आ गए, बट उसमें से हार्डली मैंने 4 to 5 reps खुद से बाइसेप से ट्रेन करे, बाकी के 4 से 5 रेप मोमेंटम से आए या किसी दूसरे मसल से आए। तो इसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड तुम नहीं कर सकते, तुम इसको पहले अपनी टेक्निक को सुधारो। फर्स्ट इंप्रूव योर टेक्निक, फिर बाद में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की सोचना। आप जो मसल से ट्रेन कर रहे हो, मेक श्योर करो कि आप वही मसल से पूरा ट्रेन करो, आप वही मसल को पूरा फटिक करो, कोई दूसरा मसल नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। लास्ट में थोड़ा बहुत हो तो चलेगा यार, ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रिक्ट फॉर्म में करना चाहिए, नहीं, लास्ट में थोड़ा बहुत हो, लास्ट के 2-3 रैप में, आई वुड से लास्ट के 2-1 रैप में हो तो नो प्रॉब्लम। बट अगर तुम सारे रैप्स में कर रहे हो तो भाई नहीं, भाई बिल्कुल भी नहीं। तो ये एकदम सिंपल सी चीज़ जो मैं तुमको बोलना चाहता हूँ भाई, बहुत ईजी सिंपल सी चीज़ है। तो अपने पहले फॉर्म को सुधारो, फिर 12 रेप सबके मसल से आने चाहिए, एंड देन आप डायरेक्टली वेट्स इंक्रीज करने पे मत जाओ। उस जो आपने वो टेक्निक को इम्प्रूव करा, ठीक है, ये भी एक प्रोग्रेस हो गई। रेस्ट कम ले तो वो भी प्रोग्रेस हो गई, प्रोग्रेस होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेट्स बढ़ाना ही प्रोग्रेस हो गई, नहीं, आपने वेट्स वेट सब कुछ बढ़ाया, आपने करा सब कुछ, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ तुमको, अब क्या करो तुम कि अपने टेक्निक टेक्निक को हमने सुधार लिया, अभी अपने कॉन्सेंट्रिक अपने इसेंट्रिक को कंट्रोल करो, अपने इसेंट्रिक को स्लो करो, 2 से 3 सेकंड लो। वो उसमें अगर आप फिर ऐसा नहीं कि 12, उसमें भी आपके 12 रेप आ जाएंगे, नहीं, आपके 10 रेप्स आएंगे, उसमें 8 भी आ सकते हैं। फिर उसको धीरे धीरे इंक्रीज करो, फिर 8 का 10 होगा, 10 का 12 होगा, फिर जाके आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। फिर उसको सेम वैसे ही करो जैसे आपने 10, आपने पहले अपनी टेक्निक सुधारी, फॉर्मिंग सब कुछ इम्प्रूव करा, फिर आप जाके अपने वेट्स इम्प्रूव करें। और सच बताना एक बात फिर से बताना चाहता हूँ कि भाई भले ही बड़े बड़े मसल्स है, चेस्ट बड़ी मसल हो गई, बैक बड़ी मसल हो गई, लेग्स बड़ी मसल हो गई, कि भाई इनको भी टाइम लगता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में। ऐसा नहीं कि वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ बढ़ते जाते हैं, नहीं भाई। कितने टाइम से मैं फ्लैट में प्रेसिंग मूवमेंट, मतलब डंबल प्रेस में कितने टाइम से भाई 35 किलो ही मार रहा हूँ, कितने महीनों से बोल सकते हो वो। लेकिन मैंने अपने टेक्निक इंप्रूव करा, फॉर्म इंप्रूव करा। वो जो पहले 6 रेप में मारता था वो क्वालिटी रेप्स नहीं आते थे, अब वो 6 के 6 रेप्स क्वालिटी आ रहे हैं। अब धीरे धीरे मैं ऐसे प्रोग्रेस करूंगा 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 करूंगा। जब मैं बाय 8 से 10 रेप पे आ जाऊंगा ना, तो फिर वेट इंक्रीज कर दूंगा अच्छे फॉर्म में। जब मेरे 8 से 10 रेप तो आ जाएंगे ना 35 किलो पे, तो फिर मैं अपना वेट इंक्रीज कर दूंगा, मैं 40 पे करूंगा, फिर 40 पे वैसा ही करूंगा भाई जैसे 35 में मैंने किया, 35 को मास्टर किया, दैट्स इट।